और चेयर देख लीजिए। थैंक यू। मैम आप ये ऑफिस का काम देने में आप ऑफिस का काम करते हैं। मतलब ये बाहर का देखा काम अच्छा है। हाँ अच्छा लग रहा है देखते हुए। एक बार वेट एक मंदिरा ये वाली ब्रोशर किसमें डाले? इसी में डाल रहे हैं। ये कहाँ से लिए? अभिषेक सिर्फ अभिषेक मुझे ब्राउजर दे दीजिए। यहाँ पे नाम लिखा दिया था। ब्राउजर ले लिया। वेट एक मिनट ऐसे ही रहिए। वेट 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 एक मिनट ऐसे। थैंक यू। इधर देखना भैया। थैंक यू। थैंक यू। एक इधर देखिए। वेट मैडम इधर। Assembling again at 11 o'clock. I repeat, we are in Haiti now. We will be assembling again. दिए हुए थे ना। वेट एक वेट अभी नाश्ता कर रहे हैं कॉलेज में। वो आ रही है पर्सन तो नहीं अभी भी इस्तेमाल
Hello everyone, thank you for coming, meeting the teachers, professors and everybody. So first of all, we would like to stand up for in the honor of the national anthem, please. GSTS or the Graduate Scholars Talk series is the very exemplification of this belief, which is a student-initiated, student-executed and a student-led initiative. A very warm good morning to the galaxy of intellectuals present here for the offline celebration after the completion of our 100 successful talks. Before diving straight into the topic and straight into the session and relishing the most exquisite articulations from the best of our speakers, we extend our heartfelt gratitude to all of you for being a part of this event, and that is Art of Articulation, which has been organized by the Graduate Scholars Talk series and IQAC, that is Internal Quality Assurance Cell of Shyam Lal College Evening, a renowned institution under the University of Delhi. I, Samridhdi Kandpal, along with my co-host Mr. Ajay Gupta, wholeheartedly welcome you all in a very informative session, and that circumscribes the best of our speakers that we have had so far in our journey. As they say, it is good running if you are heading in the right direction, and therefore it is also important to remember the people who had a very significant role in our freedom. And Gandhiji's calm composure and his most humble simplicity are the two most significant attributes that seem quite fragmented as ideals in the contemporary times. Gandhiji said that, carefully watch your thoughts, for they become your words. Manage and watch your words, for they will become your actions. Consider and judge your actions, for they have become your habits. Acknowledge and watch your habits, for they shall become your values. And understand and embrace your values, for they will become your destiny. Today, on 30th of January, we remember Mahatma Gandhi through this thought-provoking idea of him on Martyrs' Day. His contributions are very paramount in India's struggle for freedom. And therefore, we will begin this session, which is Art of Articulation, by the GSTS, which is again a student-centric platform, and let us therefore remember Gandhi with his exceptional view on acquiring knowledge when he says, live as you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. So, let us now get straight into our session. See, Adam Smith says, you cannot defeat darkness by running from it. With lotus-like eyes and an embodiment of knowledge is the provider of the light and intellect and wisdom
wisdom and who blesses us all with knowledge. And therefore it has been rightly said that Saraswati Mahabhage Vidya Kamal Lochane Vidya Rupe Vishalakshi Vidyam Dehi Namostute. Hereby, I now request our honorable chief guests, our most dignified guests of honor and renowned professors to come forward for lamp lighting, which shall be preceded by Saraswati Vandana by Mr. Vishesh and Ms. Bhavya to express our worship to the Lord, the maintainer of this creation. Ya Shubhravastra Ya Veena Vardanda Mandit Kara Ya Shweta Padmasana Ya Brahmajata Shankara Prabhati Devai Sada Samam Patu Saraswati Bhagavati Nishesh Jadapa Shuklam Brahma Vichar Sar Parama Ajnan Jagat Vyapani Veena Pustak Dharani Mabhyadam Jagyanjkara Paham Harte Patiknaritani Vidati Padmasane Sanstitha Vande Tam Parameshwari Bhagavati Buddhi Prada Sharda. धन्यवाद. अरबा वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें. शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति पर ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा देवी सरस्वती की मैं वंदना करती हूँ. धन्यवाद. Thank you. So greetings to everyone once again. Hello, my name is Ajay and I am one of the graduate scholar talk series moderator और मैं आप सभी का इस सेमिनार में इस्तकबाल करता हूँ. कहते हैं कि गुलदस्ता अगर खाली हो तो भी फूलों की याद दिलाता है. वैसे अगर आप लोग आज यहाँ या आपकी यहाँ गैर मौजूदगी होती तो भी आपकी रूहानियत का एहसास हमको रहता है. मगर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी इस जगह पे पहुँचे. मैं आज यहाँ आप सबके सामने GSTS की एक छोटी सी जर्नी, एक छोटा सा डेफिनेशन पेश करने आया हूँ. मगर किसी भी चीज़ को डिफाइन करने से पहले मुझे गालिब का एक शेर याद आ जाता है. जब गालिब से किसी ने पूछा कि गालिब कौन है, तो गालिब ने बड़े लहजे से जवाब दिया कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या. तो जब मेरे से कोई GSTS के बारे में पूछता है, सवाल करता है, बोलता है कि GSTS क्या है, तो मेरे मन में भी यही शेर आता है कि वो पूछते हैं GSTS क्या है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या क्या. मगर मैं गालिब की तरह अपने शब्दों को यही इंतकाल नहीं दूंगा. मैं GSTS के बारे में आपको बताने, समझाने, उसे एक्सप्लेन करने की और 2 साल का जो हम कंटिन्यूस चल रहे हैं उसका ब्यौरा देने की पूरी कोशिश करूंगा. GSTS यानी ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज is a weekly public talk series that is held on every Sunday at 5 p.m. on the online platforms such as Manvi. We have started this series on 7th Feb 2021, and yes, you have heard right, this was the peak of Corona. It was a, chaos everywhere. Life was stuck,
everything was foggy, especially for the students. They didn't know what to do, where to go, and how to settle their mental imbalance. And that's where GSTS born. And the man behind the initiative is Dr. Manish Karmwar, who has shared with this idea. And we, the team of students, believed in it, and we executed it by thinking that we are doing a socio-educational service to the society. GSTS is a platform where students from all the backgrounds come and present their thoughts, their views, their researches, and their opinion, and especially on the topic of their own choice. The topic is always being of their own choice. And this is the democratic framework of GSTS, where each and every decision is being taken by the student. The whole GSTS is being executed, implemented, governed, administered by the team of 6 moderators, which are students, and behind them, 22 other moderators are working day and night to make it a big success. And with this perseverance, GSTS, here standing in front of you, honored, proud, and obliged, by felicitating 100 speakers, 100 talks, by continuing from 100 Sundays. GSTS have touched 35 colleges of University of Delhi, where 90 plus students have got the recognition. The colleges like Mata Sundari, Venkateshwar, St. Stephen, Hindu, Ramanujan, and others have been touched. And not only the University of Delhi, GSTS is being opening its wing, and its presence is marking other universities of India. For example, IIT Guwahati, Uttaranchal University, Chandigarh University, and Banaras Hindu University. We have 100 facilities and faculties from 70 different colleges of India. We have uploaded 95 videos on our YouTube channel, which is being, and by seeking our efforts, the Doordarshan News, thank you Santosh sir, Doordarshan News has telecasted our graduate scholar talk series on the show Jazba India. वो कहते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है, और GSTS उन्हीं हौसलों के साथ आज आगे बढ़ रहा है और यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि हमारा ये मानना है, और हमारे मनीष सर का भी ये मानना है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। शॉर्ट वीडियो ऑफ ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज जो आप सबको बताएगा कि GSTS की जर्नी क्या है और GSTS का आखिर मोटिव क्या है। मिस्टर शुभम Achieving new heights under the chairmanship of Srimati Savita Gupta, Principal Professor Hemant Kukreti, and IQAC in charge Dr. Pramod Kumar Dwivedi. सफलता की ओर कदम तूने बढ़ा लिया, सफलता का अभी शीर्ष झुकना बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहान बाकी है। 100 Sundays, 100 weeks, 100 speakers from 50 different corners of our country, 100 talks on different ideas, and 100 guests of honor from 70 different colleges of India. GSTS has given me a great opportunity to talk series. अपना शक्ति आयोजन करने जा रही है। ऐसा करने वाली श्याम लाल साथी की यह संस्था शायद मेरे विश्वविद्यालय की ऐसी अकेले अपने कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है उसको टूटने नहीं दिया, और ये शायद एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर कि इस संस्था में होने का मुझे गर्व है। हमारे महाविद्यालय के इतिहास विभाग की समिति साक्ष्य ने IQAC के साथ मिलकर है, और यह एक अच्छी उपलब्धि है महाविद्यालय के लिए, एक बड़ी उपलब्धि है। मैं यह मानता हूँ This life's greatest present tells our vision for future. There is one such initiative that began 2 years ago. To have a look, let us take a step back to the year 2021, the year when the entire world was struggling against the pandemic, in the premises of Shyam Lal College Evening. Entitled the Graduate Scholars Talk Series, or acronym GSTS, this platform was the brainchild of Dr. Manish Karmwar from the Department of History of Shyam Lal College Evening. This academic platform gave the students from different corners of our country that academic exposure and the scholarly platform to present their research views in the most authentic and professional ways. And if we come back to the present, let us have a look on the achievements of this platform.
Till date, the platform has completed 100 different speakers from different corners of our country. We have hosted 100 successful talk sessions across different corners of our country on different variety of topics and 100 different ideas. The chief guests who came for this show have been glued to the show since GSTS 1 to 100, and we've been highly elated that on 30th of January 2023 we will be celebrating the offline celebration of the completion of the century of our talks. But before getting straight into the world of GSTS and Sakshya, let us have a glimpse of the Department of History of Shyam Lal College Evening, which will be preceded by GSTS in this upcoming video. So let's get started. पूरी कंटिन्यूएशन में कोविड पीरियड में चलता रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ये प्रोग्राम ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लोगों के बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने के लिए, एक अपने आइडियाज को देने के लिए, और साथ ही एक क्वालिटी डेवलपमेंट जो होता है बच्चों में उसको बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। Is on the path of being a peaceful. In the centenary year of Delhi University, this is our contribution towards academic excellence of the Institute of Eminence. GSTS 100 is the beginning of a new experience and exuberance. Through this initiative, we inculcate confidence to our scholars. कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकते? पत्थर तो तबीयत से उछाल हो गया। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का गेस्ट फैकल्टी हूँ। मैं साक्ष्य हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक्स के 100वें एपिसोड कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में सबको बधाई देना चाहूँगा। विशेष तौर से उन लोगों को जिन्होंने श्याम लाल कॉलेज से संबंधित ना होते हुए हमारा इसके 100 एपिसोड कंप्लीट करने में हमारे सहयोग किया है। Hello, I am Shubham Tiwari, a GSTS moderator. GSTS means Graduate Scholars Talk Series, which are held up every Sunday at 5 p.m. And in which students are not just from Delhi University, but also from other universities such as Magar University, Uttarakhand, IIT Delhi, IIT Guwahati. This initiative has also been recognized and telecast by Doordarshan last year. Hello, my name is Ajay and I am one of the Graduate Scholar Talk Series moderator. As you know that every student wants to speak something. They want to speak on various matters like environment, sedition, polity, economy, water conservation, space, nuclear, etc. etc. But the real reason and the real problem that lies behind is that the availability of platform. That's where Graduate Scholar Talk Series lies in. The aim of the Graduate Scholar Talk Series is to provide a platform, a stage, a space for the students so that they can manifest their thoughts, their opinions, their views, their researches in a more comprehensive manner. And in turn, GSTS also provides expert opinion of professors and various students, which helps a student or a speaker to shape a very thoughtful insight. Hello, my name is Saurabh Singh and I am one of the moderators of GSTS. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि GSTS ने स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प की। तो अगर हमें ये समझना है तो पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर GSTS किन परिस्थितियों में उभर के आया। वो कोविड का समय और जब लॉकडाउन एकदम पीक पे था, हम सब किसी ना किसी तरीके से परेशान थे, कॉलेजेस बंद थे। उस समय में GSTS एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आया जिसने हम सबको अकेडमिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रखा, हमें बाकी स्टूडेंट्स से, टीचर से कनेक्टेड रखा। इसने स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपनी किसी भी मन पसंदीदा टॉपिक को हम सबके समझ प्रस्तुत कर सकें। इसने स्टूडेंट्स को चीज़ों को रिसर्च करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, अलग अलग डेटा ग्राफ्स का यूज़ करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया। साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन के बाद उनके कॉन्फिडेंस लेवल में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। और जो सबसे बड़ी चीज़ रही, जो GSTS ने इन स्टूडेंट्स को हेल्प किया, इन स्टूडेंट्स ने भी हमें कन्वे किया कि इस प्रेजेंटेशन के बाद उनके जो एक स्टेज फियर होता है उसको उभरने में काफ़ी मदद मिली। Success is not measured by what you accomplish, but by the opposition you have encountered and by the courage you have stood up against the overwhelming odds. With this, I Manvi Saraswat works as the Prime Minister of the Society and also as one of the GSTS moderators. If I talk about the procedure of Graduate Scholar Talk Series, and as
कांटेक्ट करते हैं विद इन 24 आवर्स और फिर हम उन लोगों को डेट फाइनलाइज करके देते हैं संडे। जिस दिन संडे को उनका टॉक होता है उससे पहले वेडनेसडे और थर्सडे को उसी वीक में हम लोग उनके साथ एक प्री मीट रखते हैं जिसमें हम उनका टॉक सुनते हैं ताकि अगर कुछ रिसर्च हमें उन्हें बताना है या कुछ सजेशंस देने हैं तो वो हम उन्हें बता सकें, क्योंकि हमारे लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर स्पीकर्स का रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर उनका टॉक ओवर हो जाता है इसका ये मतलब नहीं कि हम उनसे कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं, हम उनसे उनके फीडबैक में रहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं और इसीलिए वी हैव मेड इट टू 100 GSTS and it was a journey of determination, dedication and discipline. Greetings to everyone. This is Subhi Singh, Secretary of Sakshya and a very proud moderator of Graduate Scholars Talk Series. GSTS is now going to accomplish another milestone, which is Head and Talk Series, and which we are going to celebrate in offline mode from Google Meet on universities on Conference Center in University of Delhi. जब हम GSTS के accomplishments के बारे में बात करते हैं, अब तक का हमारा सबसे बड़ा accomplishment ये रहा है कि हमने पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली टॉक सीरीज करवाया हर संडे विदाउट एनी गैप। बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं। जब मैं सबसे अकम्पलिशमेंट की बात करूँ, सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट हमारे लिए ये रहा है कि हमने अपने स्पीकर्स को आत्मविश्वास दिया है। मैं एज अ मॉडरेटर स्पीकर से गेस्ट ऑफ ऑनर से बहुत क्लोज इंटच में रहती हूँ, तो everyone has very positive reviews about this initiative and there are much more to accomplish after Head and Talk. Hello everyone, this is Samridhdi Kandpal and I am highly privileged to be one of the moderators of the Graduate Scholars Talk series. If you wish to be a part of something absolute, to bring out the best of your expressions and to be mentored by our nation's topmost professors, we invite you all to be a part of this academic platform that has been nurturing and enhancing the graduates candidates research work. नमस्कार, मेरा नाम देव चौधरी है और मैं वर्तमान में साक्ष्य की एडमिशन यूनिट में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। Hello everyone, I am Nikita, currently working in administrative as Vice President of Sakshya. Hello, I am Shailendra Rathod, currently working in the administrative team of the Sakshya as Vice President. I, on the behalf of the whole administrative team, want to congratulate GSTS on the successful completion of its 100 talks. GSTS has provided us a platform to develop teamwork, responsibility, conversational and organizational skills. It has taught us how to manage our administrative tasks and be responsible for our work. Hello everyone, I am Gautam Kumar and I am currently as a library head of Sakshya. खुदे को कर बना आपकी तकरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता दे हेलो एवरीवन, आई एम मदर इन and I am currently working as library head in Sakshya Society. As an academic head of Sakshya, I assist and handle all the research work related to the department, write articles and research people who website it. जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री या युग है तो एकेडमिक, बिना एकेडमिक के आप किसी फील्ड में खड़े तो हो सकते हैं बट सर्वोच्च तक पहुंचने में काफी फासले रहता है। तो हमारा काम इस फासले को कम करना है। Greetings everyone, I am Priyanka Verma, Cultural Head of Sakshya. Hello everyone, myself Ashish Singh, I am currently working in creative team of Sakshya. Hello everyone, I am Ajay Gupta, currently I am working with creative team of Sakshya. Hello everyone, myself Manish Karmwar, I am working with creative team of Sakshya. Hello, this is Mandira Paul, currently working with the creative team of Sakshya. At first, I would like to congratulate GSTS for its centenary celebration on the behalf of the whole creative team, and I would also like to tell that GSTS always been a support for the student to practice the freedom of speech with immense knowledge, and it also gave us opportunity to build our personality in a creative way and learn to know more and more.
Congratulations are for the nomination of 100 टॉप। इस बात की बहुत खुशी है, साथ ही गर्व है कि श्याम लाल कॉलेज साथी दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो GSTS के माध्यम से विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच दे रहा है जिसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, जितने भी विषय हो सकते हैं उन पर बहुत ही अपने विचार रखे हैं। और ये बहुत ही मैं गर्व महसूस करती हूँ कि आज हमारा 100वां GSTS का मंच का आयोजन हो रहा है। GSTS टीम ने इसमें इनिशिएट किया है 100 एपिसोड के लिए, 100 डेज के लिए। दैट मीन्स ये हमारे कॉलेज के साथ साथ हमारे पूरी यूनिवर्सिटी के लिए प्राउड मोमेंट है। एज ए एकेडमिक काउंसिल मेंबर मैं अपने बच्चों को जो इस टीम के हिस्सा हैं, जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। GSTS ने अपना पहला बेबी स्टेप 7 फरवरी 2021 को रखा और इसमें हमारे ही कॉलेज से मदद ने एक बहुत ही जानदार और शानदार प्रेजेंटेशन दी। उनका टाइटल था रिविजिटिंग इंडियाज अर्लीस्ट ट्रेडिशन। पहले ही एपिसोड से मैंने अपने आप को GSTS से भावनात्मक रूप से जुड़ा पाया और ये महसूस किया कि GSTS आगे कुछ नया इतिहास रचने वाला है। विषयों की जो विविधता रही उसके बारे में तो इस प्लेटफॉर्म पे कहना बहुत मुश्किल है। बहुत वैरायटी रही विषयों की, फ्लोरा, फौना, दिल्ली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया ट्रेडिशन, वो क्या क्या वहाँ पर नहीं था। I would like to congratulate the whole team of GSTS for completing its 100th episode, which is huge, and it was not that easy. I still remember when Manish sir actually initiated the idea. Of course, there has to be, a lot of anxiety, fear, doubt, how it is going to go in the future, but it has become a huge hit. आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राख के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है, तैयारी जारी रखो। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब जारी। It has been rightly said that it is more important to know where you are going than to see how fast you can. Therefore, as a result, we have had the best first 100 Sundays, 100 weeks, 100 speakers from 50 different corners of our country, 100 different ideas, and our 100 most renowned guests of honor. And these 20 minutes, trust me that these 20 minutes have definitely been one of our most overwhelming moments. Summing up the span of 2 years in one shot wasn't an easy and justified task, but it is definitely our purest overflow and purgation of emotions for this exceptional platform. And now, when we look back, the sudden realization of the fact that we have come a long way is rather dazzling and heart-touching. And therefore, I extend my sincere and heartfelt thanks to our speakers, professors who came in as chief guests, the moderators, our most renowned convener of the platform, the academic, creative and cultural team of Sakshya, the History Society of Shyam Lal College Evening, to all those people who worked in the background in the most magnanimous ways, to the ones, the people who woke up in late nights, sitting with a cup of coffee, just to ensure that the Sunday comes out to be the best one. And to the ones who were constantly busy on calls the whole day for the perfect execution, planning and organizing of the sessions on Sunday. Thank you everyone. And GSTS यानी कि ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज की जितनी तारीफ की जाए वह उतनी ही कम प्रतीत होती है। इस मंच का आगाज हुआ था 7 फरवरी 2021 और तब से लेकर आज तक हर रविवार में हमारे सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं के अद्वितीय वार्ता सत्र अंकित हैं।
GSTS की शुभम शुरुआत से लेकर आज तक हुए 100 वार्ता सत्रों की अजय बढ़त का कारण हमारे विद्यार्थियों का शोध प्रयासों से बेहतर करने का लगन, समर्पण और अर्चना है। GSTS छात्रों के लिए न सिर्फ एक सराहनीय मंच है, बल्कि समाज में विद्यार्थियों के लिए एक मानवीय विचार है। यही कारण है कि GSTS की ख्याति व सौरभ एक विश्वविद्यालय या एक राज्य के भीतर परिसीमित नहीं है, बल्कि इसकी श्रुति हमारे देश के विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में जागृत कर रही है। इसीलिए GSTS जैसा अद्भुत मंच समृद्धि प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वैश्विक महामारी में इतना सकारात्मक कदम उठाने वाली सोच किसी मन के ईश्वर अर्थात मनीष की हो सकती है। हम यही आशा करते हैं कि आप सदैव इस मंच व हमारे प्रयासों के साथ जुड़े रहेंगे और हम यूं ही आसमान की बुलंदियों को प्राप्त करते रहेंगे। With this, let us move on to the next segment of our session. And as John Steinbeck has said that I have come to believe that a great teacher is a great artist, and teaching might even be the greatest of all arts, since it is the medium of human mind and spirit. And it is our utmost pleasure to have such renowned professors with us as our guests of honor for this event. Hereby, we shall now proceed with the felicitation ceremony by our GSTS moderators. Therefore, I feel highly grateful to have intellectual assets like you with you all, and therefore our moderators would like to present a token of appreciation for the felicitation, as it is a student-led initiative. First of all, I would like to call Professor Balram Pani sir, who is the chief guest for today's event, and I would like to call Ms. Manvi to come up to felicitate sir. I would like to call all the dignitaries to come forward and have a seat, please. I would like to request every one of you to give a huge round of applause for our guest performer. For today's session, we have Shri Keshav Rai Arora, who is the member of the governing body. We have Professor Balram Pani, who is the Dean of Colleges of University of Delhi. We have Shri Santosh Kumar, who is Additional Director of Doordarshan News. Next up, we have Professor Geeta Bhatt ma'am, and ma'am is currently the Director of NCWEB from University of Delhi. Next in the series, we have Professor Hemant Kukreti, who is serving as the Principal of Shyam Lal College Evening. We also have Dr. Pramod Kumar Dwivedi sir, who is the IQAC in charge of Shyam Lal College Evening, and we have Dr. Manish Karmwar, who is the convener of GSTS. So first of all, I would like to request Shri Keshav Rai Arora sir to please come up, and Ms. Manvi to please felicitate sir. Thank you so much, sir. Next up, we have Professor Balram Pani, who is the Dean of Colleges, University of Delhi. And I would like to request Ms. Archana to please come up and felicitate sir. Next up, we have Shri Santosh Kumar sir, who is the Additional Director of Doordarshan News. So I would like to call Mr. Saurabh to please felicitate sir.
Next in the series, we have Professor Geeta Bhatt ma'am, who is currently working as a director and contributing her efforts for the Non-Collegiate Women's Education Board of University of Delhi. And I would like to request Mr. Shubham Tiwari to please felicitate ma'am. Good. Next in the series, we have Dr. Pramod Kumar Dwivedi, sir, who is the IQAC in charge of Shyam Lal College Evening. And I would like to request Ms. Preeti to please come up and kindly felicitate sir. Yes. Next in the series, we have Professor Hemant Kupreti, sir, who is contributing his efforts as the principal of Shyam Lal College Evening. And I would like to request Ms. Shubhi to come up and felicitate sir. Thank you so much to all the teachers for being there in the show of Art of Articulation. These are the occasions whose memories last longest because they are often the ones that matter the most. They are the occasions whose importance transcends the academic interests. They address the human needs that all of us share. With this, we will now proceed to our next inaugural session. Let us now have a glimpse of our journey from GSTS 1 to GSTS 100 that has been encapsulated in a book, that is the Graduate Scholar Talk series. So I would request Professor Bharti and other guests to please unveil the book. So please. Journey from GSTS 1 to GSTS 100. It has been well encapsulated by the team of editors, which are students only. This book has also been only written and everything has been done by the team of students. Okay, so we will now proceed to the next segment of this session where we would like to felicitate all our guests of honor who have been a constant support from GSTS 1 to 100. And we feel it an extreme privilege of ours to have those renowned, most dignified and honorable professors as guests for this celebration of the offline event of Graduate Scholars Talk series. I would now like to request all the student volunteers to please felicitate our most distinguished guests of honor for today's event, who have also been there in our journey as chief guests for our 100 diligent talks. I would like to request audience to kindly give a huge round of applause for all the teachers. And we feel it a privilege that we as a students, we consider this our privilege that we are felicitating our most distinguished guests. And this felicitation is synonymous to our respect towards our teachers, and being a part of this ceremony or the felicitation ceremony by the students will surely catalyze the confidence level among us. So thank you so much to the student volunteers as well, and thank you so much to all the teachers for being a part of the student-led initiative since the inception of GSTS. These teachers have always been our support. They were the steel frame of GSTS. Thank you everyone. Thank you so much. Teachers are often called many things. They are called educators, mentors, instructors, and sometimes the accidental mom. No matter what they are called, we can always agree that they have a true gift of influencing our lives both inside and outside. And obviously inside and outside of the classroom as well. And everyone can recall all their special teachers
that have profoundly impacted their life. And again, I would like to say that we feel highly privileged that you spared and shared your valuable time with all of us for this offline celebration. So, heartiest and most heartfelt thanks to all of you. Now with this, we would like to proceed further also. Ms. Samridhdi, please start with the welcome address. A few days back, my eyes got a glimpse of a very ethereal shlok that is actually a literal manifestation of the indispensable worth of education. It says, Na chaur haryam, na raj haryam, na bhadra bhajyam, na jabhar karyam, Vyay krite vardhate nityam, vidya dhanam sarve dhanam pradhanam, which is, education is the best wealth among all, no one can steal it, no state can snatch it. It cannot be divided among the brothers and it is not heavy to carry. And we have such teachers among us as chief guests. So first up in the series, I would like to call upon Professor Hemant Kukreti. Professor Hemant sir हिंदी साहित्य के प्रख्यात ज्ञाता हैं and वर्तमान में सर श्याम लाल कॉलेज इवनिंग के प्रिंसिपल के रूप में अपनी भूमिका में विशेष योगदान दे रहे हैं। GSTS की उन्नति व संशोधन में सर ने हमेशा ही हमें सहायता प्रदान की है। सर की हिंदी विषय में रुचि उनके द्वारा प्रकाशित विभिन्न शोध पत्रों में भी प्रतिबिंबित है। ऐसे शिक्षक का हमारे समक्ष प्रस्तुत होना और अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करना ही हम सबके लिए एक अत्यंत आनंदमय अनुभव है। Therefore, I would like to request Professor Hemant Kukreti to please come up with his address note. Sir. मंच पर आसीन प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर गीता भट्ट, डायरेक्टर एनसीपी, श्री केशव राय अरोड़ा, मेंबर गवर्निंग बॉडी, डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी, डॉक्टर मनीष करमवार, श्री संतोष कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज दूरदर्शन, सभागार में उपस्थित अध्यापक साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य में ये कहा जाता है कि साहित्य क्या कोई भी जो कला रूप होता है कि वो एक क्षण को पकड़ता है, एक क्षण को पकड़कर वो उसको कालातीत कर देता है। लेकिन मैंने बारीकी से देखा कि केवल रचनात्मक उसमें ही नहीं होता, जो वैचारिक अनुष्ठान भी होते हैं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान तो दोनों जगह है, वहाँ पर भी जो विचारक है वो एक विचार को पकड़ता है और उसको कालातीत कर देता है। ये मुझे इस मंच पर आकर पता चला। GSTS की परिकल्पना ही अपने आप में इतनी रोमांचकारी थी कि मुझे लगा कि ये इन लोगों ने आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया और लगातार यानी अनथक तरीके से लगन के साथ, और जिसे हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक प्रार्थना की तरह, साधना की तरह हमारे विद्यार्थी और हमारे अध्यापक उसमें लगे रहे। अगर इसको देखें तो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया था दूरदर्शन ने 13 फरवरी 2022 को, और जो राष्ट्रीय पहचान केवल ये नहीं था कि एक नेशनल चैनल ने आपको किया है, राष्ट्रीय पहचान बनाने के पीछे कारण ये भी था कि जो इन लोगों ने विषय उठाए, और एक अभी मैं गीता जी से बात कर रहा था, ये देखना कितना अच्छा लगता है कि आपने बिल्कुल उदार तरीके से सब कुछ विद्यार्थियों को सौंप दिया। और आज ऐसा लगता है कि हर विद्यार्थी, हमारा एक विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी नहीं है, अपने आप में एक शोध छात्र है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूँ कि जिसमें जो विद्यार्थी है वो अपनी भूमिका को समझता है, उसको बहुत कम सीमित संसाधनों में पूरा करने का जज्बा रखता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इस तरह की संस्थाओं का, इस तरह की जो समितियाँ होती हैं, उनका योगदान यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारे लोगों ने, अब मैं किस किस का नाम गिनाऊँ, इन सब लोगों ने लगातार जिस तरीके से हम लोगों को अप्रोच किया,
जो वक्ताओं को अप्रोच किया, और इतना ही नहीं उसको डॉक्यूमेंटेड भी किया। जो ये आप देखेंगे तो ये तो एक छोटी सी बानगी है। मुझे अच्छी तरह याद है, तब मैं इवनिंग में नहीं था, मॉर्निंग में था, तो इन्होंने शुरुआती उसमें एक प्रोग्राम किया था ओपन बुक एग्जाम के ऊपर, और कम से कम आधा दर्जन कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने मुझे अप्रोच किया कि आपके विद्यार्थियों ने कुछ बहुत अच्छा किया है, वो कहाँ से मिल सकता है। तो ये मैंने देखा, अब मॉर्निंग में तो ऐसा था नहीं, तो बाद में पता चला कि ये सब चीज़ें इन लोगों ने किया। या वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इनका जो था वो बहुत अच्छा था। सौभाग्य से मुझे भी एक जो इनका एपिसोड था साइलेंस के ऊपर, मौन के ऊपर, मेरा पसंदीदा टॉपिक था, और मेरे साथी प्रमोद द्विवेदी भी उसमें बोले थे। लेकिन हम दोनों को देखकर ये अच्छा लगा कि जिस विद्यार्थी ने उसमें भाग लिया उसकी तैयारी हम दोनों से ज़्यादा थी, और ये देखना बहुत अच्छा लगता है एक अध्यापक को कि आपका विद्यार्थी आपसे आगे जा रहा है, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इसी जज्बे के साथ ये लोग आगे बढ़ते रहे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और मैं कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप जिस भी भूमिका में हम लोगों को रखेंगे, हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो मुझे एक अमीर खुसरो का शेर याद आता है जब मैं ऐसी कोई बात बोलता हूँ। तो वो कहते थे कि उन्होंने एक शेर लिखा था, एक कविता लिखी थी, कहते हैं कि जिहाल मिस्की मकुम तगफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो उन्होंने किसी और लहजे में लिखा था, लेकिन मैं इसको किसी और लहजे में तब्दील करता हूँ। हमारे यहाँ भी हम जब थे तो हमारे साथ भी कई सारी डार्क नाइट्स थी, कई सारे उतार चढ़ाव थे, लेकिन रमेश सर यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पूरी जान से हमारी मदद करने की कोशिश की। जब भी हमें कोई नीड पड़ी तो उन्होंने हमें संभाला और उन्होंने हमें आगे रास्ता भी दिखाया। थैंक यू रमेश सर फॉर योर काइंड सपोर्ट टू अस। प्लीज सो मच सर। कहते हैं कि डूबती कश्ती में सब चीख रहे हैं तबिश, डूबती कश्ती में सब चीख रहे हैं तबिश, मुझे डर कि मेरी गजल पूरी हो जाए। तो मुझे भी डर लगता था कुछ बोलने में, कुछ कहने में, कुछ समझाने में, लेकिन इस डर को दूर करने की कोशिश जिनसे मैंने सीखी वो है डॉक्टर प्रमोद कुमार द्विवेदी। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर प्रमोद कुमार फॉर वेलकम एड्रेस। ही इज द एसोसिएट प्रोफेसर of Hindi in Shyam Lal College Evening. And he has more than 30 plus years of teaching experience. Sir has been a constant guide and support for GSTS. Thank you, sir. आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर बलराम पानी सर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज दूरदर्शन श्री संतोष कुमार, प्रोफेसर गीता भट्ट मैम, हमारे महाविद्यालय के गवर्निंग बॉडी के सदस्य श्री केशव राय अरोड़ा, हमारे प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत कुकरेती, इतिहास विभाग के शिक्षक प्रभारी डॉक्टर DN सिंह और GSTS के कन्वेनर डॉक्टर मनीष करमवार, यहाँ उपस्थित हमारे महाविद्यालय, अन्य महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के गणमान्य अध्यापक गण और प्रिय छात्र छात्राओं, आज यहाँ हम एक ऐसी यात्रा को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो यात्रा काफ़ी सुखद रही है, काफ़ी सुकून देने वाली है और भविष्य के लिए काफ़ी उम्मीद देने वाली है। आज से 2 वर्ष पूर्व जब डॉक्टर मनीष करमवार ने ग्रेजुएट स्कॉलर टॉप सीरीज की परिकल्पना की थी, तो
हम सबको उस समय हमारे प्राचार्य डॉक्टर रमेश कुमार थे और IQAC के इंचार्ज प्रोफेसर प्रशांत कुमार थे और हम सब जो विद्यालय के महाविद्यालय के अध्यापक गण थे, हम सबको उनकी यह परिकल्पना अच्छी लगी थी और हम सब ने इसमें अपना सहयोग देने का वादा भी किया था। लेकिन हमें यह कतई नहीं लगा था कि डॉक्टर मनीष करमवार अपने कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों के उत्साह और लगन को साथ लेते हुए इस टॉक श्रृंखला को यहाँ तक लेकर आएंगे। यह एक ऐसी यात्रा रही है जो प्रतिभागिता के धरातल पर बहुत ही व्यापकता और फैलाव लिए हुए रही। विमर्श के धरातल पर बहुत वैविध्यपूर्ण रही है और इस यात्रा की जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती रही है वह इसका अटूट निरंतर है। कभी भी इस यात्रा में मैंने ठहराव नहीं देखा। एक भी ऐसा रविवार नहीं आया जब से इस यात्रा का सूत्रपात हुआ कि शाम को 5 बजे हो और इस टॉक श्रृंखला का आरंभ न हुआ। ये कार्यक्रम हमेशा आरंभ हुआ, चाहे उस रविवार को होली पड़ी, दिवाली पड़ी या कुछ भी हो। मैं इस यात्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह यात्रा विद्यार्थियों के सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने, उनकी वाक कला को मांझने, उनमें शोध दृष्टि प्रविधि जो होती है शोध की, उसकी जो कला है, उसकी जो समझ है, उसको जागृत करने और उन्हें ज्ञान विज्ञान के विविध अनुशासनों से परिचित कराने का एक प्रयास है। आज जब हम विश्व गुरु भारत की बात करते हैं तो हमारे महाविद्यालय की ओर से उस दिशा में यह एक बहुत छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास को बल प्रदान करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए इतने महत्वपूर्ण लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। Thank you so much for your kind words. Next in the series of our welcome addresses by our most distinguished guests of honor, we have Professor Balram Pani among us, and Professor Pani is currently serving as the Dean of Colleges of the University of Delhi. And it brims our heart with ecstasy to have the privilege of hosting Professor Balram Pani as the chief guest for today's much anticipated session. Professor Pani is a prolific personality in the academia with a dynamic range of ideas on a plethora of subjects ranging from the intricacies of electronics to the surreal world of the social sciences. Sir is highly dedicated to foster the best learning ambience for the students of the institution of the University of Delhi. He has scattered aid to provide conducive and professional growth for the students. Hereby, I now request Professor Balram Pani to please come up with his welcome address. Thank you, ma'am. Good morning to you all. Namaskar. On the dais,
Honorable Member of Governing Body, Shri Kesam Arora Shri Santosh Kumar ji, Additional Director General, News Durdarshan, Professor Hemant Kukredi ji, the Principal of Shyam Lal College Evening, Professor Geeta Bharti, the Director NCUAC, University of Delhi, Professor Ravi is not here, but is expected to come here, and Dr. Pramod Kumar Dwivedi ji, the IQAC in charge, Dr. Manish Karmwar ji, the convenor GSTS, moderators Mr. Ajay Gupta and Mrs. Samridhdi Kandpal, Ms. Bharti ji, and Mrs. Shubham Tiwari. And the faculty of Shyam Lal College and professors and my dear student friends. It is all about that is the graduate scholar talk series 100. Our university is also celebrating its 100 years, that is the centenary year. In the centenary year, you are also that in the talk series, it is the 100, this is the 100. And whenever, this is the graduation level, if you do such time, means in our time, means nobody was daring that time to have such type of terms. And even the students at that time, they were not so privileged and so lucky like you. Means you are better equipped and you have the better information system, because whenever you want to go for any internet system from the internet and you go for the Google, and you can have some informations. But in our time, there is no such type of system. So therefore, means what you are doing, that is generally a good system. Means that I saw that in the Department of History, because everywhere it is said that means many people read history, but your history department they make history. As far as my knowledge is concerned, means I don't know, means anywhere in Delhi University, those having art, means in the graduation level, 100 talk series, I don't think in any college of the Delhi University has. So you have but whatever the book you have released, GSTS, in that book it is not confined to the history, means it covers all the sections, means in the political sciences. Even I saw one just at a glance, means when I was looking after, means one article it is based on the celestial world. Means even though it is the evening college, they have covered to some extent in the science section also. And you know, whenever you are saying that your anchor, I don't know, means he is the Ajay Gupta or whoever, means who was talking about, means all these things, means what you are doing, means you cannot see that okay, there is no hole in the sky. But thing is that there is a hole, you can say in science is the ozone hole, but it is not exactly that. And Samridhdi Kandpal was saying that you are getting popular. Yes, definitely. If you will work hard and if you will plan in a proper way, and if your aim and objectives is very, very clear, what to do, what not to do, and you have planned in a very meticulous way, and those who are in this team, they have planned, they have worked very hard way, and they have contacted with the many resource persons. Means it was also saying that the quantum of resource persons and the quantum of the participants, it shows
that you have planned in a better way. And always, there is no shortcut to be at the top. So you have to have proper knowledge about that one, what you are doing, means that is your aim and objectives. Say you are doing so that whatever we are doing, the seminar, that the conference, whatever it is, that should be very success. And it is the 100 continuously, means that the continuity is there. The great thing is that means you can go for any seminar for 2 days, 1 week, 1 month, but continuously 100 talks will go, then that is the great. That continuity should be there. And after this also, means if it is the total 100 talks has already been completed, then you should go ahead of that one. You should not stop here. This continuity should be maintained, because at this time the academic, it needs something, because you know the graduation students at the graduation level, right now, those who have participated here, means at least for one article they have studied many books or many articles. So this is the reading habits, writing habits all together. Means one of the students was saying that, okay, Dr. Tiwari has cared him to be very, to live their level, and right now, means you the students, when have means at this graduation level, you have written a good article, and definitely it will help you in future, and it will go for the higher studies, in the research work, definitely it will be. And it's such type of activities, if particularly, I think if it will be spread to any other colleges, then definitely it will be also good. At the graduation level, at least, this type of activities is not there. So you are the torch bearer, and definitely it will be great help to the other students. And articles are very good, means just I have seen so many articles, means just articles, means I found that, okay, these articles are very good. And you the students, I wish you all the best, and definitely this type of, this is right now 100 talks, at a time you will also celebrate 1000 talks. Similar way. Final round. Please stand up and take blessing from me. Thank you, sir. Thank you so much. And I'm very glad to announce that we are biggest platform in University of Delhi, and one of the biggest in India, to provide the platform for the students so that they could express their opinions.